my next topic is electric dipole. When the two opposite charge situated in a sorted distance 2L, this system is called electric dipole. जब भी कोई भी दो अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से 2L डिस्टेंस से स्थित होंगे, ये जो आपका सिस्टम है ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल. फॉर एग्जांपल, HCl NH3 CH4 H have a positive charge and Cl have a negative charge. That system is called a electric dipole, where two opposite charge situated in a shortest distance 2L, that is called a electric dipole. Next topic is electric dipole moment. अगर कोई भी टू अपोजिट नेचर के चार्ज है, इनमें से अगर कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें हम Q, और जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ charge and the shortest distance between two opposite charges 2L, that its product is called a electric dipole moment. Means the product of magnitude of any one charge of electric dipole and shortest distance 2L called a electric dipole moment. जब भी कोई भी पैदो द्विध्रुव जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें से दो जो चार्ज हैं आपके अपोजिट जो है उनमें से कोई एक का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए Q, और इनके बीच की जो दूरी है शॉर्टेस्ट 2L, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है, अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो आप जानते हैं चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम. और जो यहाँ पे 2L है, ये क्या हमारी डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर, इसलिए ये आपकी यूनिट हो जाती है कूलम मीटर. ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है.
vector quantity. The dimension of electric dipole moment I know the dimension of charge q 80 and the dimension of length capital L. Then the dimension of electric dipole moment is LT. You know the dimension of electric dipole moment is LTA. This is a vector quantity and its unit is coulomb meter. Charge of the unit of charge coulomb and the unit of distance meter. Then the unit of electric dipole moment is coulomb meter. I hope you understand. My next topic is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो हम लोगों को कूलाम लॉ पता है. वैसे ही अगर कोई दो चार्ज हैं Q और Q0 जो एक दूसरे से क्या है r डिस्टेंस पे रखे हुए, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ the attraction or repulsion force created here, then F proportional Q into Q0 upon R square. You are already read this formula, F proportional Q1 Q2 upon R square. Here the two charges Q and Q0, then the formula used F proportional Q into Q0 upon R square. Q0 replace here, then the F upon Q0 equal Q upon R square. F upon Q0 is called a electric field intensity. It means F upon Q0 is equal to the electric field intensity capital E. So we put here capital E equal E proportional Q upon R square. E proportional Q upon R square. Then equal constant K into Q upon R square. When remove K, then we use equal and put the constant K. Then the value of K 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R square. Its unit is Newton per coulomb. So the electric field intensity due to a point charge. अगर किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है तो दो पॉइंट चार्ज लेंगे आप Q और Q0, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेंगे, आर लेंगे, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे कूलाम लॉ. देन F proportional Q1 Q2 upon R square. Q0 transfer to below F, then that is called a electric field intensity. So E proportional Q upon R square or proportional remove, then put the equal and constant K. So E equal K into Q upon R square. Put the value of K 1 upon 4 pi epsilon naught. Then the E equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is a electric field intensity due to a point charge. Next,
My next topic is electric field intensity in axial position of an electric dipole. मान लिया ये इलेक्ट्रिक आपका सपोज दैट ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज. The distance between two charges 2L. The middle point of electric dipole here O. Then the distance divided two parts. The distance of here O to B equal to L upon 2. It means L. Here 2L upon 2 equal L. अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्सियल पोजीशन में ज्ञात करनी है. मतलब इसी के एक्सिस पे हम कोई पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे P, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब यहाँ पे क्या है, टू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी E1, और इसकी डायरेक्शन आपकी एक्सिस की डायरेक्शन में उधर ही होगी. माइनस क्यू जो चार्ज है इसके कारण जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या हो जाएगी, E1 के अपोजिट. The value of point B to P point, the distance is, here distance B to O L, the distance of O to P is R, then the distance of B to the P R plus L या L to L plus R. So the value of B to point P is R plus L. The value of B to the O L and the value of P to O is R. Then the total value of B to P is R plus L. The value of A to P, the value of total O to P R minus O to A, the value L, then the distance of A to P equal R minus L, the value of B to P equal R plus L, and the value of A to the P equal R minus L. You understand? We know that the formula of electric field intensity. So due to plus Q charge, the electric field intensity on point P E1 equal 1/4 pi epsilon naught the
value of E1 equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L का whole square. You already know the value of a point charge equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. So the distance is a to the p equal R minus L. So here R minus L to the power 2. This is your first equation. Due to minus Q charge, the electric field intensity E2 equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus L का whole square. The resultant intensity on P equal E1 plus minus E2. Why I put minus here? Because E2 is opposite the E1, or another say, when you take here positive charge and when you put the value here minus Q, then the minus charge will be generated here, or you put the value E1 equal minus E2 because E2 is opposite the direction of E1. Then the resultant equal E1 minus E2. Put the value of E1 and E2 from equation 1 and 2. Then the equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L to the power 2. If we take any medium, the dielectric constant is K. So you use here the dielectric constant capital B minus 1 upon 4 pi epsilon naught K Q upon R plus L whole square equal कांस्टेंट जो वैल्यू है हमारी उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? कांस्टेंट वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई epsilon naught और Q दोनों जगह से मिल जाएगा. जो ब्रैकेट में आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर. सॉल्व इट. equal 1 upon 4 pi epsilon naught K into Q R plus L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर to whole power 2. Then use here formula A plus B
to whole power 2, and here a minus b to whole power 2. Then equal 1 upon 4 pi epsilon naught k into q r square plus l square plus 2rl minus r square minus l square, r square plus l square minus 2rl whole upon r square minus l square to the power 2. Multiply minus here all values, then E equal 1 upon 4 pi epsilon naught k q into r square plus l square plus 2rl as it is, and when the minus multiply here, then the minus r square minus l square minus minus plus 2rl upon r square minus l square to the whole power 2 plus r square minus r square plus l square minus l square cancel. Then equal 1 upon 4 pi epsilon naught k 2rl add, then 4rl upon r square minus l square to power 2. I know that the formula P equal Q into 2L. We want to use here this formula, so we write again that type 4 2 into 2 into r into L upon r square minus L square to the power 2. Q, 2 and L. We put the value of Q into 2L is P, because P equal 2L, so we use here Q into 2L for P. Then 1 upon 4 pi epsilon naught k P into 2r upon r square minus L square to power 2. Next step, the value of L is less than R. We know the value of L less than R, or L square less than R square. So we can say or take R square equal L square equal 0. जो L स्क्वायर है वो क्या है, R स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ही कम है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो शून्य लगभग मान सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, L स्क्वायर की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 upon 4 pi epsilon naught k 2pr upon r square की पावर 2, r square की पावर 2, it means 1 upon 4 pi epsilon naught k 2pr upon r to the power 4. R and r to the power 4 cancel. Then equal 1 upon 4 pi epsilon naught k 2p upon r cube.
The value of K for any medium or vacuum K equal 1. By the practically we found out by the scientist the K value equal is 1. Then the intensity equal 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube Newton per Coulomb. So this is a result. Electric field intensity in axial position of an electric dipole is equal 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. I hope you understand all derivations. Again, we meet next classes. Thank you so much for this class.